Welcome back. For weeks, campaigning has continued in Bihar, but largely been peaceful. However, the past 24 hours have witnessed one very serious incident, with Jan Suraaj supporter Dularchand Yadav being shot dead. This incident comes 6 days before the first phase of the voting in Bihar. Under the lens is JDU candidate and gangster turned politician Anand Singh, who is considered Yadav's rival. Now, Dularchand Yadav was considered one of the most powerful personalities in Mokarma and a former aide of Lalu Prasad Yadav. He was believed to have increased the foothold of RJD in Mokarma in 90s when Lalu Prasad Yadav was the chief minister. Witnesses have suggested that Dularchand was initially beaten with sticks and then shot. The local residents reportedly refused to allow the body to be moved for over 5 hours. My colleague Ritesh was in fact in Mokarma when he heard the gunshots due to the continued feud. Let's listen in from this report that he has filed. एन चुनाव से पहले मोकामा का माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा सुलग रहा है। अभी उनकी शव यात्रा निकली हुई है और बाढ़ ये शव यात्रा जा रही है, लेकिन जो दुलारचंद यादव के समर्थक हैं उनका आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है, पत्थरबाजी की गई है और हमारे साथ उनके रिश्तेदार ही मौजूद हैं। क्या ये अभी क्या हुआ कि आप लोग कह रहे हैं कि गोलीबारी की गई है? अभी वहाँ पर तो देखिए हम लोग आ रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर थे रोड पर और पत्थर चला गया और आनंद सिंह का वहाँ पर ऑफिस भी था और ऑफिस के पास ही पत्थर चला गया और गोली का भी आवाज़ सुना गया है, फायरिंग का आवाज़ आया है। तो उसमें सारे समर्थक इधर से उधर भीड़ हुआ है। वहाँ पे भगदड़ मची थी, क्या क्यों ऐसे हो रहा है बार बार? अब ये तो जनता मालिक है, जनता विश्लेषण करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को शव यात्रा निकला हुआ है, उस यात्रा में जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ भगदड़ पत्थरबाजी हो रहा है, गोली चल रहा है। अनंत सिंह को क्यों इतनी नाराजगी है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, आप लोगों ने भी उन पर मामला दर्ज कराया है। अब ये तो अनंत सिंह क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो खुद वो कैसा विचारधारा से है तो हम सब लोग जानते हैं। कौन लगते हैं? हम उसके लगते हैं, वो उनके दुलारचंद के दामाद हुए हैं। अच्छा, दामाद हुए? हाँ, दामाद हुए। तो देखिए कि ये स्थिति है। आप कौन हैं? दुलारचंद भाई हुए। अब दुलारचंद यादव आपके भाई है? नहीं, ये तो हम लोग भाई हैं। क्या कहेंगे इस तरह से चीजें जो हो रही हैं, क्या कहिएगा? सब चीज तो दिख रहा है सामने ही, पथराव अभी तो पथराव हुआ ही। गोलीबारी की भी बात? हाँ, गोलीबारी की आवाज सुनाई दी अभी। किसने की गोलीबारी? किसने की? अब यहाँ के लोग जो है वही लोग। कौन लोग हैं? अब सब तो जान ही रहे लोग, सबको जान ही रहे। प्रशासन भी वहाँ पे देखे ही आप लोग किस तरीके से। आप बताइए क्या कहिएगा, कौन लोग गोलीबारी कर रहे हैं? अनंत सिंह के गुर्गा है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमको फंसाने की साजिश रची गई है। ये सारा चीज जो है वो किया जा रहा है सूरजभान सिंह की तरफ से। सरकार के संरक्षण है, उनको कौन फंसाएगा? अभी गोलीबारी हुई है, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, पथराव भी हुई है। ऐसा नहीं ना हो सकता है कोई दूसरा भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा हो? दूसरा कौन कर सकता है? अनंत सिंह के खिलाफ कौन कर सकता है? कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर गोलीबारी हुई है। सब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं दुलारचंद यादव के, और इन्होंने कहा है कि गोलीबारी हुई है, पत्थरबाजी की गई है और पूरी जो ये सड़क है, ये बाढ़ जा रही है ये सड़क, और बाढ़ में ही उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पूरी तरीके से ये देखिए कि सड़क जो है एकदम स्टक हो चुकी है, गाड़ियां रुक चुकी हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डर, दहशत लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है। यहाँ तक ये स्थिति है कि पुलिस की जो गाड़ी है वो जाम में फंसी हुई है और पुलिस को हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो निकलकर स्थिति को कंट्रोल करे। तो अब ये कौन कर रहा है? अगर अनंत सिंह ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो क्यों उन पर एक्शन नहीं हो रहा है? अगर ये किसी की राजनीतिक साजिश है तो फिर वो साजिशकर्ता कौन है जो चुनाव में फ़ायदा उठाना चाह रहा है और उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात तो तय है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले मोकामा रक्त रंजित हो चुका है और मोकामा की जो ये आग है,
ये सिर्फ मोकामा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आग दूसरे जिलों में भी लगाने की कोशिश हो रही है ताकि इसका चुनावी फायदा मिल सके। अब देखने वाली बात होती है कि ये कौन लोग हैं जो चुनावी फायदा लेने की कोशिश में हैं। लेकिन जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं मोकामा में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। और अब पुलिस को कड़ा और गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि जो ये आग फैल रही है, जिस आग को फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके कई सारे मायने हैं। कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, इसे फौरन डिकोड करने की ज़रूरत है, नहीं तो मोकामा एक बार फिर से उसी जंगल राज की वापसी की ओर दिख रहा है, जिससे बड़ी मुश्किल के बाद मोकामा बाहर निकल कर आया है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, मोकामा। Joining me on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra. रितेश, अभी हमने देखा आपने एक रिपोर्ट फाइल की थी जब शव यात्रा जा रही थी, वहाँ पर भी लोगों ने गोलीबारी की आवाज़ सुनी थी। तो क्या वहाँ पर अभी भी वायलेंस चल रहा है उस एरिया में, बाढ़ में, मोकामा में क्या स्थिति है, प्लीज़ हमें बताएं। रितेश, क्या आपको हमारी आवाज़ पहुँच रही है? We'll try to get Ritesh back on the line with us. Till then, I want to introduce our viewers to the guests who are actually joining us on this broadcast to discuss this issue. Sanjay Sahai, former IPS officer, and MK Meena, former IPS officer as well. Thank you both of you for joining us. We appreciate your time. I want to start off this discussion with Mr. Sahai. Mr. Sahai, this is a return. Is this a return to blood politics in Bihar? No idea whether it is a return or not a return, because whatever I have been reading, primarily preparing for this particular discussion with you. So I see there are lots of criminal activities which has been happening. So might be on the face of it or a big political killing has not taken place. But violent situations have arisen, and Bihar politics is primarily even the elections which are going on. It is primarily criminal intimidation and heavy financial investment. And it's basically a power play of these Bahubalis. Mokarma, I was just trying to check up. It is basically a Bahubali battle. And the government has not been able to respond in last 5, 6, 7 hours, and absolutely nobody has any idea of whether Anand Singh was involved and whosoever was involved. And this Anand Singh and Suraj Singh, they have a long-standing feud. And Suraj Singh's wife, Veena Devi, I think she is the candidate from that place. Anand Singh, which we have done a whole circle of different political parties and currently is with the JDU. So this is precisely where it stands. So I somehow am not of a thinking that everything was very peaceful and hunky-dory. And if you go by the number of candidates with criminal backgrounds and very serious criminal cases against them, it is running somewhere in the range of 40-50%. So that is where we stand. I'm also failed to understand how the whole local administration and Election Commission of India finds everything to be very peaceful and in a very, very orderly manner. I think your correspondent was talking about that the police is not in a position to get control of the situation, and the body was kept where this incident happened for around 5 hours. So certainly things have gone amiss, and this has been the history of Bihar, and I think things are going unabated. Anand Singh happens to be on the side of the current government, and whatever you have been hearing when the body is being taken for postmortem, still some gunshots are being heard. Suffice to say that the Election Commission of India, for people who have conducted elections, like Mr. Meena also, so all the firearms, so they are seized. They are supposed to be deposited to the local district magistrate and all the police stations wherever they are supposed to. Now the firearms are still there. If the fire shots are being heard and people are being shot at, I think the firearms are already there. So I think the point is that at a differential level things are happening. At one level we talk of development, second level we talk of bureaucracy and police under control, and third level is the real level
which is the real democratic India. And this is primarily, and I was going through a couple of details. There are at least 12 constituencies in Bihar who are these Bahubali types. I call it the Bahubali battle. So it is there that permeating fear and all sorts of criminal notoriety. It is there in action. Sometimes it is coming to the surface, might be because of the electoral battle is a bit too hot, and Anand Singh has decided that whatever come may, he should not lose the elections. So broadly, this is it. Right, Mr. Sai. Before I go across to Mr. Meena for his comments on this issue, I want to go across to my colleague Ritesh Mishra, who is again back on the line with us. Ritesh, अभी हम वही देख रहे थे, आपने एक रिपोर्ट फाइल की थी जब वो शव यात्रा जा रही थी, तब भी आपने गन शॉट्स सुने थे. अभी क्या सिचुएशन है बाढ़ में, मोकामा में? प्लीज़ हमें बताएं कि अभी भी टेंस है वहाँ पर सिचुएशन? बिल्कुल, अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से टेंस है और कई सारी फोर्सेस, कई थानों की पुलिस जो है वो कैंप कर रही है. खुद जो पटना के एसएसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ऑन स्पॉट हैं. अभी जो पोस्टमार्टम है वो अभी जारी है और हजारों की तादाद में जो दुलारचंद यादव हैं उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं और लगातार वो आनंद सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो दुलारचंद यादव की शव यात्रा है उसमें तकरीबन हमें 5 घंटे लग गए उस शव यात्रा के दौरान, क्योंकि गाड़ियों का इतना काफिला था, इतना जाम था, रह रहकर झड़पें हो रही थी. बीच में एक बार तो ऐसा लगा कि दोनों जो गुट हैं वो एक बार फिर से आपस में भिड़ जाएंगे. गोलीबारी भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई. फिर पुलिस फोर्स ने इन सारी चीज़ों को टैकल किया, लोगों को समझाया और बुझाया गया. लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगातार नारेबाजी हो रही है और पूरा जो मोकामा इलाका है, टाल इलाका है, बाढ़ इलाका है, वहाँ पर सिचुएशन अभी भले ही अंडर कंट्रोल दिख रहा हो, लेकिन अंदर अंदर लोगों के आक्रोश पल रहा है. और चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से ये पॉलिटिकल हत्या हुई है, इसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. और इसका असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोकामा बाढ़ पर ही इसका असर होगा, बल्कि बिहार के दूसरे जिलों पर भी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा. और यही कारण है कि जो डीजीपी हैं वो एक एक अपडेट पुलिस कर्मियों से ले रहे हैं. सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि शव यात्रा आगे जा रही थी, वहां पर फिर पत्थरबाजी हुई, वहां पर फिर गोलीबारी हुई, फिर आपस में तनातनी, फिर भिड़ने वाले थे, लेकिन पुलिस ने फौरन सिचुएशन को कंट्रोल किया. इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मोकामा में क्या स्थिति है और किस सिचुएशन में यहाँ पर इलेक्शन हेल्ड होने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी की अरेस्टिंग उस तरीके से नहीं हो सकी है. हालांकि जो मृतक हैं उनके परिजनों ने आनंद सिंह पर बाई नेम एफआईआर किया है. इसके अलावा उनके भतीजों पर, उनके समर्थकों पर एफआईआर की गई है. आनंद सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता नहीं है, बल्कि जो उनके विरोधी हैं सूरजभान सिंह, उनकी साजिश है ये. अब देखने वाली बात होती है कि आखिर ये हत्या के पीछे की वजह क्या है, किसने ये हत्या कराई है, हत्या के पीछे की वजह क्या है. ये जितनी जल्दी आएगा उतना जल्दी यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, पुलिस प्रशासन के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं. उनके मन में एक डर है, एक खौफ है कि इलेक्शन के पहले अगर इस तरह से पॉलिटिकल हत्या होगी तो फिर किस तरीके से लोग बूथों पर जाएंगे, वोट करेंगे, क्योंकि सभी लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. और यही कारण है कि पुलिस जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाह रही है. अगर बात करें तो सरकार के लोग भी इस पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, किसकी संलिप्तता, कौन इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें निकाली जा रही हैं. लेकिन सबसे बड़ी और सबसे गंभीर और खतरनाक बात इस पूरे हत्याकांड में ये है कि इसमें जाति का रंग दिया जा रहा है. इसको जातीय. बिल्कुल रितेश, धन्यवाद आपका. एब्सोल्युटली, आई मीन द पॉइंट्स दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, दिस क्लियरली विल हैव repercussions not just for Bar or Mokarma but the entire political landscape of Bihar. I want to rope in Mr. Meena now into this discussion. Mr. Meena, I mean, we will come to the politics of this entire murder later, but the election model code of conduct is in place. How are people roaming around with guns, firing bullets in the state?
This case, I can say it is failure of Patna police and Bihar police to ensure proper law and order, and they could have stopped this incident when they know all the parties who are involved in these elections, their candidates or their supporters are having criminal background. In fact, in such a situation, the police should have deployed more police personnel, and whenever there is movement, they should have deployed more persons. How it is surprising. They are having free, they are free firing anywhere. They are having firearms. How it is possible? There is no proper checking by police. And in fact, I could say one thing, that in Bihar, there was no proper planning for Bihar policing, if I say as a professionally. Like Patna is a very big city. It has very big districts. It has got very big population. And there only one SSP rank officer, IPS only one, who is only dealing with this city. In fact, many states, most of the states in India, they have improved their policing in their capital district. Everywhere you will find officers of IGP rank are heading these districts. But here, very surprising, IG range is heading. He is having jurisdiction of other districts also. That's why the proper planning is not there. If you see their figure of Bihar police, there is acute shortage of manpower in police. How it is possible that we can blame police officers, but until unless they are provided proper adequate number of police personnel, adequate number of other facilities including vehicles, we can't expect result. Such incident will happen. So government has to think seriously. Whoever will come, they should really improve policing system in Bihar, especially in Patna. Patna, they should put IG rank officers, and there must be more SSPs in the Patna city and districts, so that proper law and order is maintained. And they should immediately recruit persons. If you see their figure, which is available on the on the paper or like in public affair, like there is acute shortage of manpower. Wherever we see in newspaper, when we read in newspaper, we can see in media, everywhere, we can see acute shortage of manpower. And one thing I can comment, the political parties are claiming that we are having clean politics. But see, the Mokarma is a case. It can be studied, it can be projected, or it can be like, it is a very, very disappointing. All political parties, they are involved in having candidates having their background of criminal background. Even I don't want to comment Dularchand Yadav, but his background was also not good. Which Jan Suraaj parties, they will provide clean politics, they will provide this and this, they are promising everything. But they are also getting support of persons who are having criminal background. If they don't have any criminal background, they say clean, this incident could not have happened. Point is, by muscle power, by threatening, by anything, they want to win elections, any party. Here in this case, even ruling party has fielded a person having criminal background, which everybody knows him. So this is very surprising. We must have clean politics. Government should improve policing. Government should provide proper policing system in the city and in the state. Absolutely. I think the question of law and order does come into the picture, and taking from your points, Mr. Sahai, I want to come across to you. If we delve into the politics of this, I mean, Mokarma is infamous for its triad of, power, politics and muscle. And both of these, individuals who are currently involved in this case, Dularchand Yadav, he was a former strongman. He still is. He was known as the Badshah of the Tal. And even, the accused, Anand Singh, who has been named in this entire case by his family members, he is known as Chote Sarkar. So will we ever see a clean, politics in Bihar?
Because we are still seeing that people like this are coming to the fore. We are still seeing cases of murder just before the elections. See, actually, criminality has become the DNA and is completely internalized in Bihar politics, Bihar political parties, and best and the worst of the leaders in Bihar. So that's the reality of life. And these are the people who run governance. We have heard of Jungle Raj, but nothing greatly has changed. Was the Jungle Raj also Jungle Raj and no Jungle Raj? And Sushashan is basically just to provide some reference point to score brownie points. We had, I think, a businessman shot in Patna. There was something which happened in a hospital. So all these things are happening all around the place. What we have been doing all throughout, that we have been trying to camouflage and provide a cover to all these criminal elements. We have reached a level. They have gone beyond the law and order. That is primarily where they stand. So the whole thing is getting aligned to their existence. So one person is Chote Sarkar, one person is something else. So that is how it has been moving. And if it has been going on, so 15 years or some odd years during Lalu Yadav's times, and 20 years might be some couple of years initially in Nitish Kumar's time, things were slightly better off. So if things have been running 30, 35, 40 years in this manner, what does it speak of governance in that particular state and that particular area? And Mokarma isn't famous, and if you go through that area, Sayyid Sabuddin, variety of things have been happening. So I don't think it is happening only as a prelude to the elections. I think this has been there, and even when the criminal activity in the sense of murder or a very serious crime does not happen, I think the inner fear psychosis is all around. These are the people who are generally supposed by the electorate that they will deliver. They will deliver, and all those small things and all, which we would have heard of mafias earlier. So that is the nature and the pattern of things which are happening. So broadly, I don't know how guns are there. I have absolutely no idea how guns are there. And this has happened in a broad daylight. It has happened in a broad daylight. Whether the concerned Anand Singh was involved or not involved, so that let them investigate. But there were people, a whole group of people, which was trailing the vehicle of the deceased. So the people have seen them. They should have been picked up by now. See, if they have not been picked up. See, there's the whole situation right now where that the local administration is generally scared of taking any action because the retaliatory action or that will basically trigger off a sort of a law and order situation just on the eve of elections, which will be generally will run out of control. And the other point is the political ramifications are also being looked into. If police right now or the government right now takes an action which is generally presumed by the electorate, giving an indication either of a weak government or of a government which is supporting somebody, and depending on the caste equation and variety of things, that will have political fallout. The very details of that fallout I am not aware of, but certainly it is in that equation. That is the electoral arithmetic which runs out there. All right. We do have questions, various questions on law and order and why this actually happened in Bihar, but that's all the time that we have to discuss this. I thank both my guests for joining us on this debate. We're shifting focus now. Another report's coming in.